नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर संजय खाकिल आज आप लोगों के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम में यूनिट 5 में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। कर्नल, इनपुट आउटपुट सब सिस्टम इन ऑपरेटिंग सिस्टम। कर्नल होता क्या है, किस तरीके से हम यूज में लेते हैं। द कर्नल इनपुट आउटपुट सब सिस्टम इज ए फंडामेंटल component of modern operating system. It is responsible for the managing all input-output operations on a computer. The input-output subsystem provides the various services that enable efficient and secure management of the input-output operations. दूसरी चीज़ जब हम बात करते हैं इनपुट-आउटपुट कर्नल्स के बारे में, kernels of input output subsystem. One is the input output request scheduling, one is buffering, caching, spooling, device reservation, error handling, input output protections. Then the input output request scheduling in kernel, किस तरीके से रिक्वेस्ट शेड्यूलिंग होता है। जब हम पर्टिकुलर किसी भी इनपुट आउटपुट सिस्टम के अंदर कोई शेड्यूल करते हैं रिक्वेस्ट को, तो सबसे पहले हम उसको एग्जीक्यूशन प्रोसेस रिक्वेस्ट भेजते हैं जो इम्प्रूव करता है किसी भी सिस्टम परफॉर्मेंस को, और उसको परमिशन को रिड्यूस करता है एवरेज वेटिंग टाइम और रिस्पॉन्स टाइम को, एंड टर्न अराउंड टाइम को इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस के अंदर कंप्लीट करने का काम करता है। देन वन ऑफ द की सर्विस प्रोवाइडेड बाय द इनपुट आउटपुट सब सिस्टम इज द शेड्यूलिंग ऑफ इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट. Scheduling involves the determining the best order in which to execute input-output request to improve system performance, share device access permission failure, and reduce the average waiting time, response time, and turnaround time for input-output operation to complete. The operating system develops the implement schedules by maintaining a wait queue of request for each device, and input output scheduler rearrange the order to improve the efficiency of the systems. One is the buffering. Another important service provided by the input output subsystem is buffering. Buffers are used to cope with speed mismatch, provide adaptation for different data transfer size, support copy segment for the application input output. A buffer is a memory area that stores the data being transferred between two devices or between a device and an applications. नेक्स्ट के हम बात करते हैं कैशिंग. कैशिंग क्या होता है? कैशिंग इज एन अनदर सर्विस प्रोवाइडेड बाय द इनपुट आउटपुट सब सिस्टम. It is a region of fast memory that holds copy of data. पापा यहाँ पर लगा दो, अच्छा लगे. Making access to the cache copy much easier than the original file. The main difference between the buffer and a cache is that a buffer may hold only the existing copy of the data item, while a cache holds a copy of faster storage of an item that resides elsewhere. Then after spooling and device reservation. Spooling क्या होता है और device reservation क्या होता है? Spooling and device reservation are also important service provided by the input-output subsystems. They are used to hold the output of a device, such as printer, that cannot accept interrelated data stream in a buffer known as the spool. All application output is spooled in the separate disk file, preventing all output from continuing to the printer. When the application finish printing, the spooling system queue the corresponding spool file output to the printer systems.
then error handling. Then the error handling is another crucial function of the input output subsystem, which guarded against many kind of the hardware and application error. An operating system that use the protected memory can prevent a complete system failure from the minor mechanical device, and input output transfer can fail the transitively and permanently, but the operating system can handle such as the failure in different ways. Then input output protections. What is the input output protections? Finally, the input output protection ensure that user process cannot issue illegal input output instructions to disrupt the normal functions of the system. Input output subsystem implements the various mechanisms to prevent such disturbance by defining all input output instructions as privileged instructions. User cannot issue input output instruction directly, preventing illegal इनपुट आउटपुट एक्सेस। तो दोस्तों ये था आपका कर्नल मोड। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे बफरिंग इन ऑपरेटिंग सिस्टम। तब तक आप मेरे साथ बने रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।